ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऐच्छिक विषय, वैकल्पिक विषय भी जिसे कहते हैं, जिसका टाइटल है लॉ, उसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का डिटेल्ड सिलेबस को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। एट ए ग्लेंस देखेंगे कि आखिर सिलेबस क्या है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का। तो सर्वप्रथम हम लोग जैसे इस लॉ के कह सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं या फिर कानून के जितने भी एज ए ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय के रूप में इसे सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को कह सकते हैं कि में बैठने के बाद अपना ऑप्शनल को चयन करने को लेकर एक बहुत ही दुविधा रहता है। उन्हें लगता है कि मेरे हिसाब से जैसे लॉ हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब विषय जो है कानून से मिला जुला रहता है, तो इन सब सब्जेक्ट्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं या नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेंस एग्जामिनेशन में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनेंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Constitution and constitutionalism, the distinctive feature of the Constitution. Second point में fundamental rights, public interest litigations, legal aid, legal services authority. Third point में है relationship between fundamental rights, directive principles, fundamental duties. Point number 4, constitutional position of the president and relation with the council of minister. Point number 5, governor and his power. Point number 6, Supreme Court and High Courts. Point 6A, appointment and transfers. B है powers, functions and jurisdictions. Now point number 7, center, state and local bodies. 7A, distribution of legislative powers between the union and the state. B, local bodies. C, administrative relationship among union, state and local bodies. D, eminent domain, state property, common property and community property. Point number 8, legislative powers, privileges and immunities. Now point number 9, services under the union and the states. Recruitment and conditions of services, constitutional safeguards, administrative tribunals. B में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर्स एंड फंक्शंस. C में है इलेक्शन कमीशन, पावर्स एंड फंक्शंस. 10 पॉइंट में है इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इमर्जिंग ट्रेंड एंड जुडिशियल अप्रोच, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट्स constitutionality. And point number 14, separation of powers and constitutional governance. Point number 15, judicial review and administrative act, judicial review of administrative action. And point number 16, ombudsman, lokayukta and lokpal etc. Now international law, अंतर्राष्ट्रीय कानून. पॉइंट नंबर 1 में है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सेकंड पॉइंट में है रिलेशन शिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ. पॉइंट नंबर 3 में है स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन. पॉइंट नंबर 4, लॉ ऑफ द सी, इनलैंड वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी. पॉइंट नंबर 5, इंडिविजुअल नेशनलिटी, स्टेटलेसनेस, ह्यूमन राइट्स एंड प्रोसीड्यूर्स अवेलेबल फॉर देयर एनफोर्समेंट. Point number 6, territorial jurisdiction of state, extraditions and asylums. Point number 7, treaties, formation, applications, termination and reservation. Now point number 8, United Nations, its principal organs, powers and functions and reforms. Peaceful settlement of disputes, different modes, lawful resource of forces, aggression, self-defense and interventions, fundamental principle of international humanitarian law, international convention and contemporary developments. Point number 2, legality of use of nuclear weapons, ban of testing of nuclear weapons, nuclear non-proliferation treaty and CTST. International terrorism, state-sponsored terrorism, hijacking, international criminal courts and new international economic order and monetary law, WTO, TRIPS, GATT, IMF, World Banks. Point number 15, protection and improvement of the human environment, international efforts. Now अब हम लोग पेपर 2 पढ़ेंगे ऑफ लॉ. लॉ ऑफ क्राइम्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लिएबिलिटी, means rea and actus reus, means rea and statutory offences. Point number 2, kinds of punishment and emerging trends as to abolition of capital punishment. Point number 3, preparation and criminal attempt. Point number 4, general exceptions. Point 5, joint and constructive liability.
Point 6 abatement. Point 7 criminal conspiracy. Point 8 offences against the state. Point 9 offences against public tranquility. Point number 10 offences against human body, offences against property, offences against women, defamation, Prevention of the Corruption Act 1988, and point number 15 Protection of Civil Rights Act 1955, subsequent legislative developments. Point number 16 plea bargaining, law of torts, nature and definition, liability based upon the fault and strict liability, absolute liability, vicarious liability including state liability, general defenses and joint torts features. Point number 6 remedies, 7 negligence, 8 defamation, 9 nuisance, 10 conspiracy, 11 false imprisonment, 12 malicious prosecutions, 13 Consumer Protection Act 1986. Now law, contract and mercantile law, nature and formation of contract and e-contract, factor vitiating free consent, void, voidable, legal and unenforceable agreements, performance and discharge of contracts. Point number 5 quasi contracts, 6 consequences of breach of contracts. Point number 7 contract of indemnity, grantee and insurance. Point number 8 contract of agency. 9 sale of goods and hire purchase. Point 10 formation and dissolution of partnership. Point 11 negotiable instrument acts 1881. 12 arbitrations conciliation act 1996 and a standard form of contracts. Now contemporary legal developments, public interest litigations, intellectual property rights concept and types, prospects. And point number 3 information technology law including cyber law, concept, purpose and prospect. Point number 4 competition law, concept, purpose and prospect. Point number 5 alternate dispute resolution, concept, types, prospects. Point 6 major status concerning environmental law. Point 7 right to information act. And point 8 trial बाय मीडिया। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने पेपर 2 भी यहाँ कंप्लीट कर लिया। इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा पेपर 1 का सिलेबस, लॉ यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों ने आज सिलेबस को रीड किया, एट ए ग्लेंस पहली नज़र में जानने का प्रयत्न किया कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में जो हमें वैकल्पिक विषय को चुनना होता है, जिसमें बहुत सारे वैकल्पिक विषय होते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री, बोटैनी, केमिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, तो अनगिनत फिर लिटरेचर के सब्जेक्ट हो गए, असम हो गया, असमीज, डोगरी, मैथिली, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हम लोगों ने सिलेबस को रीड करके हम लोग एट ए ग्लेंस पहले नज़र में जानना चाहा कि इस सिलेबस के अंतर्गत जो है कंटेंट क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।